Hello friends. Now before seeing this lecture, I am requesting you that you should solve the problem first. मतलब आपको ये पहले सॉल्व करना है और बाद में ये मैंने सॉल्यूशन दिया है उसके साथ चेक करना है कि आपने कैसे सॉल्व किया. This is question number 1, analysis of the transactions by applying rules of debit and credit. Traditional approach is there. मतलब इस तरह का मैंने पिछली लेक्चर में आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. Now I would like to give the explanation or rather solution for your exercise question number 1. लेकिन उसके पहले आपको सॉल्व करना है. सॉल्व करो अच्छी तरह से और बाद में आप चेक कर सकते हो कि मेरा कहाँ पे गलत हो गया. ओके. So number 1, this is actually given in 8 columns as you are knowing. Serial number, transaction, 2 aspects or effects, accounts which are involved, then the this category of the accounts or classification of the accounts, rules which are applied, and account to be debited, account to be credited. इस तरह से है ये. Now serial number 1 पे देखो ट्रांजेक्शन क्या है. राजा साहेब. Okay. Started business with cash rupees 85,000. Here two aspects are. Aspect number 1 is a cash comes in. मतलब business में cash आ गया. When any proprietor is bringing the capital in the business, means cash comes in the business. And proprietor is a giver of the same. Proprietor क्या है उसका? Giver है. मतलब businessman उसका giver है. Which two accounts are involved? Cash account and second is a capital account. Proprietor is a giver, मतलब capital account. Cash account is a real account, while capital account is a personal account. What is the rule applicable for the cash account? Debit what comes in. Yes, मतलब आपको comes in वाला रूल यहाँ पे लिखना था. Debit what comes in. आप चेक करो आपने क्या लिखा है. Okay. And for this second is a credit the giver. अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड. ये जो डिसीजन है ये आपको समझना चाहिए. यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड विच अकाउंट इज शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी credited. That is very important in this particular thing. Okay. Here again you try to remember. Okay, what are the rules of the personal account, real account, nominal account? क्या क्या rules है? The rule for personal account is a debit the receiver, credit the giver. Rule for real account is a debit what comes in, credit what goes out. And rule for nominal account is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Do you know that the statement for debit is different and credit is different, and और वही आपका aspect बन जाता है. जैसे देखो यहाँ पे cash comes in and debit what comes in. So cash account is debited. Capital is a giver. Capital is a giver. And here rule is credit the giver. So capital account is credited. Like that. Now number 2. Number 2 पे देखो क्या दिया आपको. Goods purchase for cash rupees 5,000. Okay. मतलब परचेज किया है, हमने परचेज किया और कैश दे दिया. So this is called as a cash transaction. This is not credit transaction. Okay. So now here aspects are purchases is an expenditure and cash goes out of business. मतलब आपने परचेज किया तो परचेज आपका एक्सपेंडिचर बन गया, बदले में आपका कैश चला गया. Now accounts involved are purchases account and cash account. परचेज अकाउंट एक्सपेंडिचर है तो आपका नॉमिनल अकाउंट है. कैश अकाउंट आपका एसेट है, सो रियल अकाउंट है. एप्लीकेबल रूल according to aspect, debit expenses and losses. So purchase account is debited, and for cash account, credit what goes out. आपका credit what goes out है, credit what goes out. So cash account is credited. हाँ, ये पावर कंजम्पशन का जो मैसेज आता है ना, इसको आपको इग्नोर करना है क्योंकि ये इस मोबाइल का फीचर है, बैटरी सेवर वगैरह बोलते हैं. उसको क्या करना है, मेरा बैटरी जा रहा है भाई, जाने दो. फिर आगे sold goods on credit worth rupees 6,000. Now when the goods are sold on credit, in that particular case the name of party should be given. मतलब पार्टी का नाम देना चाहिए.
अगर आपने किसी को उधारी में माल सेल किया है तो आप वो नाम पता तो होगा ना कुछ भाई। मैंने अनिल को गुड़ सेल किया है, सुनील को गुड़ सेल किया है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। फिर क्या है? डेटर इज अ रिसीवर। डेटर मतलब person to whom we are selling the goods on credit is called as a debtor. He is our debtor. Debtor is a receiver and debtor is a personal account. Debtor's account, personal account. Okay. Sales is an income. Sales हमारा income है because by selling the goods we are earning the money. So sales account is there. So two accounts are debtor's account and sales account. Debtor's account is a personal account. That is somebody's name. Anil, Sunil, okay, Akash, Prakash, Jakash, like this, you know. So debtor's account is a personal account. Sales account is a nominal account. What is the rule applicable? Debit the receiver. Aspect देखो. Accordingly, the rule is applied. Debit the receiver. So debtor's account is debited. Credit incomes and gains. Look at the aspect. Sales is our income. So according to the rule of nominal account, credit incomes and gains, hence sales account is credited. Number 4, cash deposited into Bank of Maharashtra rupees 12,000. बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हमने कैश डिपॉजिट कर दिया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. एनी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ICICI बैंक, HDFC बैंक, नाम है ना भी, तो वो तो पर्सनल अकाउंट हो गया. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पैसा हमने जमा कर दिया तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ रिसीवर. अब बैंक में पैसा जमा करते ना तो बैंक क्या होता है? रिसीवर होता आहे. बँकेत पैसे भरले म्हणजे काय झालं? बँक रिसीवर झाली आणि आपले पैसे गेले. गेले म्हणजे बँकेत गेले. कॅश गोज आउट. ओके. नाउ बैंक ऑफ द टू अकाउंट्स आर बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट एंड कॅश अकाउंट. बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट while cash account is a real account. According to this, okay, देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसीवर है ना, तो एप्लीकेबल रूल क्या आने वाला है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश अकाउंट के लिए रूल क्या आने वाला है? गोज आउट है ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो अमाउंट अकाउंट कैश अकाउंट इज अ क्रेडिटेड. Now next number 5, interest rupees 700. Okay, received from राधिका. राधिकाने आपल्याला इंटरेस्ट दिलं, मतलब राधिकाने हमको इंटरेस्ट दिया है, उसने दिया है. अभी इंटरेस्ट दिया है मतलब क्या दिया है? कैश दिया है ना. ओके, सो कैश कम्स इन द बिजनेस एंड इंटरेस्ट इज अवर इनकम. फिर राधिका, राधिका का कुछ नहीं है. दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन. ओके, कैश ट्रांजेक्शन में हमेशा किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता. इट इज अ डायरेक्ट कैश ट्रांजेक्शन. राधिका गिव्स यू मनी फॉर व्हाट? फॉर इंटरेस्ट. सो एक्चुअली एस्पेक्ट्स आर कैश कम्स इन एंड इंटरेस्ट इज एन इनकम. टू अकाउंट्स आर कैश अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट. कैश अकाउंट हमेशा रियल अकाउंट ही है, एसेट है अपना, वाइल इंटरेस्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. वाई? इट इज अ इनकम. Okay. Now, what is the applicable rule according to aspect? Cash comes in, so debit what comes in. And what is the applicable rule for this interest? Okay, income, so credit incomes and gains. Accordingly, cash account is debited and interest account is credited. Then the next number 6. Paid rent rupees 2,000 to landlord. लैंडलॉर्ड मतलब उस मकान का, ऑफिस का, दुकान का मालिक, उसको क्या बोलते हैं? लैंडलॉर्ड. ओके. नाउ द रेंट इज पेड टू लैंडलॉर्ड. रेंट दिया मतलब क्या दिया? भाड़ा दिया. लेकिन कैसे दिया? कैश में दिया. लैंडलॉर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर. रेंट इज अवर एक्सपेंडिचर while cash goes out. Rent is our expenditure and cash goes out. So two accounts are, one is a cash rent account, other is a cash account. Rent account expenditure है तो nominal account बन गया. And according to aspect, debit expenses and losses. So rent account is debited. On the contrary,
cash account is a real account. It goes out. So the rule is a credit what goes out. So cash account is credited. So in this way, this 6 transactions, मतलब पहले 6 transactions मैंने explain किया आपको. Now let us see the next 6 transactions. Number 7. Bought goods on credit. ये क्रेडिट है यहाँ पे. From ब्रिजमोहन ₹7,000. ब्रिजमोहन के पास से हमने क्रेडिट के ऊपर माल परचेस किया है. बॉट मतलब परचेस्ड. आपण ब्रिजमोहनकडून 7,000चे गुड्स परचेस केलेले आहेत. ओके. मग आस्पेक्ट काय म्हणायचा? परचेसेस आर एक्सपेन्सेस. अँड ब्रिजमोहन इज गिव्हर. वाय नेम ऑफ ब्रिजमोहन? बिकॉज हियर इट इज नॉट मेन्शन्ड that goods are purchased from ब्रिजमोहन for cash. So this is a credit transaction. व्यक्ति का नाम दिया है, व्यक्ति का नाम दिया है, लेकिन वहाँ पे कैश लिखा नहीं है. देन इट इज ऑटोमेटिकली बिकमिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन. और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में वो पर्सनल नाम आता ही है. सो परचेसेस आर एक्सपेंसेस वेल ब्रिजमोहन इज अ गिवर. सो अकाउंट्स आर परचेसेस अकाउंट. परचेसेस ऑलवेज प्लूरल. ओके, मतलब आपको इस तरह से लिखना है, परचेसेस नॉट परचेस, परचेसेस अकाउंट. एंड सेकंड इज अ ब्रिजमोहन अकाउंट. Purchase account is a nominal account while ब्रिजमोहन account is a personal account. Aspect क्या है? Purchases are expenses, always expenses. So purchases account debit, expenses and losses, purchase account debited. ब्रिजमोहन account, personal account, okay. He is giver. So the rule is credit the giver. So ब्रिजमोहन account is credited. Number 8. Withdrew cash from bank ₹1,000 for office use, not for personal use. Okay, but for office use. Personal use है तो वो drawings होता है, drawings. Anyway, so here, so cash is withdrawn from bank for office use. आपको याद होगा मैंने पहले एक ट्रांजेक्शन में यहाँ पे बताया था. नंबर 4 में देखो यहाँ पे, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसीवर कैश गोज आउट. ये बराबर उसका उल्टा आने वाला है. विड्रीव कैश फ्रॉम बैंक मैंने बँकेतनं पैसे काढले, हमने बैंक से पैसा निकाला. तो कैश कम्स इन एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज नाउ गिवर. हमने बैंक से पैसा निकाला, मतलब कैश कम्स इन है एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है? आपका गिवर है. Two accounts, cash account is a Bank of Maharashtra account. Cash account always real account. Bank of Maharashtra नाम है तो personal account. Now here cash comes in accordingly. The rule debit what comes in. So cash account is debited. And Bank of Maharashtra is a giver. So credit the giver. So Bank of Maharashtra is a credited. Number 9. Purchase computer ₹9,000 for cash. Now here two aspects are. पहले aspect देखते हैं. कंप्यूटर कम्स इन द बिजनेस. हमने कंप्यूटर लिया तो कंप्यूटर कम्स इन द बिजनेस. वाइल कैश गोज आउट ऑफ बिजनेस. कैश गोज आउट. कंप्यूटर आया, कैश चला गया. टू अकाउंट्स आर कंप्यूटर अकाउंट एंड कैश अकाउंट. कंप्यूटर अकाउंट रियल अकाउंट. कैश अकाउंट ऑल्सो रियल अकाउंट. बोथ आर रियल अकाउंट. बोथ आर एसेट्स. कंप्यूटर आपका एसेट होता है ना, लाइक दैट. Now here, the applicable rule according to aspect, computer comes in, so debit what comes in, computer account is debited. While cash goes out, credit what goes out, cash account is credited. Number 10, paid mobile bill for office. Mobile bill अपने दे दिया. Okay, so now mobile bill is an expenditure, खर्चा है हमारा वो. और बदले में कैश में ही दोगे ना आप. यू आर गोइंग टू मेक द पेमेंट इन कैश ओनली. सो कैश गोज आउट. सो वन इज अ मोबाइल बिल अकाउंट, अदर इज अ कैश अकाउंट. मोबाइल बिल बीइंग एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट. कैश बीइंग एसेट रियल अकाउंट. तो यहाँ पे
According to aspect, mobile is expenditure. According to aspect, debit expenses and losses. Okay, and credit what goes out. तो मोबाइल बिल को हमने डेबिट किया और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया है. कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड. नंबर 11 नाउ. सोल्ड ओल्ड मोबाइल फॉर 2000. एक पुराना मोबाइल था, सेल कर दिया. ओके, वैसे भी वो कबाड़ खाने में जाता था. ओके, एक्सचेंज में दे दिया, कुछ भी करो ऐसा, आपने सेल किया तो आपको पैसा मिलेगा. वन इज अ कैश कम्स इन. मोबाइल सेल किया, यू विल गेट मनी ऑफ कोर्स. तो कैश कम्स इन एंड मोबाइल गोज आउट. मोबाइल गया. ओके, so two accounts are cash account and mobile account. Both are real account. Both are assets. Real account. Cash is the real account. Mobile account is the real account. According to aspect, cash comes in. So debit what comes in, cash account is debited. And according to this aspect, mobile goes out. So credit what goes out, mobile account is credited. Number 12. Received rent from tenant. टेनंट म्हणजे काय? ओके, म्हणजे भाडेकरू, ज्याच्याकडून आपल्याला पैसे मिळाले. मतलब हमने किसी को भाड़े पे दिया था, उसके पास से हमको रेंट मिल गया. सो हियर टेनंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. यू आर गेटिंग कैश ऑन अकाउंट ऑफ रेंट. जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम राधिका था, ये आपको याद है ना? तो मैंने कैश कम्स इन एंड इंटरेस्ट इज एन इनकम लिखा था. राधिका का नाम तो हमने लिखा ही नहीं था. नॉट इम्पॉर्टेंट. कैश एंड इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट. सिमिलरली हियर टेनेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. कैश कम्स इन एंड रेंट इज एन इनकम. सो a cash account and rent account. Cash account is a real account while rent account is a nominal account. Okay. According to aspect, cash comes in, so debit what comes in, so cash account is debited. And according to aspect of income, credit incomes and gains, so rent account is credited. Okay. So in this way, you need to solve actually this particular exercise. अगर आपने सॉल्व किया है तो अभी आप चेक करो क्या आपने सही किया था. इसमें आपको कुछ डाउट्स है तो आपको मुझे पूछना है. लेकिन अभी इसको ख़त्म करने से पहले लेट अस अप्लाई द 4 फिंगर प्लान. सुनो अच्छी तरह से. राजा साहेब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अभी मैं जो बोल रहा हूँ, ओके, वो आपको ओरली बोलना है, मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ बोलना है. ओके, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ओके, यहाँ पे 2 अकाउंट्स, पहले 2 अकाउंट्स कौन से हैं? वन इज अ कैश अकाउंट, अदर इज अ कैपिटल अकाउंट. अभी 4 फिंगर्स. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट. Capital account, personal account, always give her credit. Number 2, goods purchase for cash 5,000 rupees. पहले 2 अकाउंट कौन से हैं? परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट. परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट. परचेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट. तो ये जो चार्ट हम लोग लिखते हैं ना, this is just to train you to decide the debit and credit according to rules. और मैं जो आपको बता रहा हूं वो शॉर्टकट है जो आपको लाइफ टाइम याद में रखना है. ओके, अब 3 नंबर देखते हैं. सोल्ड गुड्स क्रेडिट ऑन क्रेडिट वर्थ 6,000 रुपीज. पहले 2 अकाउंट कौन से? डेटर्स अकाउंट. पार्टी का नाम दिया नहीं है, नहीं तो हम लोग लेते हैं सुनील, अनिल, गुप्ता, शर्मा, वर्मा, लाइक दिस. हाँ, दिया नहीं है ना फिर. तो डेटर्स अकाउंट एंड सेकंड इज अ सेल्स अकाउंट. अभी क्या बोलना है? डेटर्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रिसीवर, ऑलवेज रिसीवर डेबिट. 4 पॉइंट. सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनकम, ऑलवेज क्रेडिट. सेल्स को क्रेडिट ही होता है. नंबर 4 देखो, कॅश डिपॉझिट इंटू बँक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट. पहिले 2 अकाउंट शोधून काढा कुठले? बँक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट अँड कॅश अकाउंट. बँक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रिसीव्हर डेबिट. कॅश अकाउंट, रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट. नंबर 5,
इंटरेस्ट ₹700 रिसीव फ्रॉम राधिका. राधिका इज नॉट इम्पॉर्टेंट. दो अकाउंट कौन से आ गए? कैश अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट. ओके, नाउ से cash account, real account comes in debit. Then interest account, nominal account, income credit. Then paid rent ₹2,000 to landlord. Landlord is not important. कौन से दो अकाउंट है? रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट. रेंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस डेबिट. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट. ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, आपको एक्सप्लेन तो पूरा हो गया अपना. अभी मैं आपको डेबिट क्रेडिट के शॉर्टकट बता रहा हूँ, मतलब ओरली कैसे आप कर सकते हो. ओके, अभी इसको देखते चलो. बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ब्रिजमोहन. यहाँ पे कैसे नाम दिया देखो. अगर नाम नहीं देते तो बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता था क्रेडिटर अकाउंट. सेल्स के लिए डेटर्स अकाउंट, परचेसेस के लिए क्रेडिटर अकाउंट. लेकिन यहाँ पे नाम दिया है ना ब्रिजमोहन का, तो ब्रिजमोहन हमारा क्रेडिटर है. दो अकाउंट कौन से है? परचेज अकाउंट एंड ब्रिजमोहन अकाउंट. ओके, परचेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट. ओके, ब्रिजमोहन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. ओके, ही इज अ गिव्हर क्रेडिट. माझ्याबरोबर अशी 4 बोटं मोजायची. पहिल्यांदा 2 म्हणजे 2 अकाउंट्स, नंतर 4 म्हणजे ते रूल अप्लाय करून लिहायचं, म्हणजे बोलायचं. नंबर 8, विथड्रू कॅश फ्रॉम बैंक ₹1,000 फॉर ऑफिस यूज. ओके, पहले 2 अकाउंट्स कौन से हैं? वन इज अ कैश अकाउंट, अदर इज अ बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट. क्योंकि हमारा बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना, वहीं पे तो हमने डिपॉजिट किया था पहले पैसा. सो कैश अकाउंट, रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट. बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, गिवर क्रेडिट. नंबर 9, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश ₹9,000. ओके, 2 अकाउंट कौन से आ गए? कंप्यूटर अकाउंट एंड कैश अकाउंट. पहले ये 2 बोलो, बाद में 4 फिंगर प्लान. कंप्यूटर अकाउंट, रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट goes out credit. Then mobile bill paid. So 2 accounts are mobile bill account and cash account. Mobile bill account, nominal account, expenses and losses debit. Cash account, real account goes out credit. Okay. Then number 11, sold old mobile. 2 accounts, cash account and mobile account. Cash account, real account comes in debit. Mobile account also real account but goes out credit. Received rent from tenant. Tenant is not important. Okay. 2 account कौन से आ गए? Cash account and rent account. So cash account, real account comes in debit. Rent account, nominal account. Our income now. Received है ना, income. So credit. So in this way, okay, you can learn and you can actually decide the debit and credit. In my next lecture, I'm going to explain to you the modern approach. ये ट्रेडिशनल अप्रोच था, देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच था ना, यहाँ पे लिखा है ना ट्रेडिशनल अप्रोच. ओके, इसका हमने पहले इलस्ट्रेशन देखा, फिर एक्टिविटी सॉल्व किया और ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गया. Okay, now I will give the explanation according to the modern approach to you. Okay, friends.